see practical number 16 to check entered name is file or a directory. See, we have so many files and directories in this current working directory. I'll use ls-l command. First hyphen shows that it is a file and d shows it's a directory. See, here we have bsc, this chk is a file, bscit is a directory. You can see that bscit is in blue color, so it is a directory. Okay, next directory, user defined directory, is moneyr, d for directory. Okay, rest all are files. This prog is a file, this swap is a file, this pause neg is also a file. File1, file2, these are also file. This hyphen shows it's a file. So now what we'll do, we'll write a program to check whether the entered name is a file or a directory. Okay, so vichk file, we have already created a file with the name to check whether it is a file or a directory. So it is practical number 6, check entered name is a directory or a file. We'll first clear the screen, then enter the name, read the name of the file, fname is the name of the variable. Using test condition, -d is used for a directory, -f is used for ordinary file. These are being mentioned in the book, just go through these options. So if test -d is used to check whether it is a directory or a file. So $file name, this dollar replaces the value of the variable. fname is a variable, इस variable की value से replace कर देगा. तो जो भी आप यहाँ नाम डालोगे, string डालोगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा. Then it is tested using the if conditional statement whether it is directory or a file. So -d specifies it's a directory. Okay, so we'll check the condition using if test -d, it is a directory or a file. So when you check with d, it specifies it is checking for a directory. If the condition returns true, then it will print a message it's a directory file. In Linux we call all as file, either it is a directory file or it is a ordinary file. Okay, then after then the message will be printed if this condition returns true, but if this condition returns false, it will go to elif, elif is else if. Condition check is -f. -f is used for ordinary file checking. So whether you have entered the file is an ordinary file or not, because once this condition is false, it goes here and checks the condition for whether it is an ordinary file or not. If this condition is true, it prints a message it's an ordinary file, but if this condition is false, it will print the message neither directory nor ordinary file, and it is closed by fi. See the syntax of if else. If the condition is checked here, then if the condition is returns true, then statement this is executed. If this condition is false, it switches to else if part, and the second condition is checked here. Now in the second condition, if this second condition is true, then part will be executed and this statement will be executed. If this condition returns false, then this statement will be executed. So this is nested if. Depending upon first condition value, it returns true, then this part will be executed. If this condition returns false, it goes to else if. Second condition will be checked. If this condition returns true, then part, and this statement will be executed. Otherwise, if both the conditions, first condition as well as second condition, both are false, then the last else part will be executed and you return the value. Now in this case, you enter any name, whether that is file or a directory or is not a file or a directory, message will be printed on the screen. तो जैसे सपोज आपने पहले मनियार डाला, मनियार डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर टेस्टिंग कंडीशन में डी में ये ट्रू आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टरी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो यहाँ आपको मैसेज दे देगा इट्स अ डायरेक्टरी. जब मैसेज जैसे ही प्रिंट होगा तो ये आगे की स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं होगी, ये डायरेक्टली एफआई पे आ जाएगा और स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी, शेल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. बट अगर सपोज आपने यहाँ पर एंटर डाला CHK फाइल, जो इसी फाइल का नाम है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है
chk फाइल, अगर यही नाम डाला आपने तो पहली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये एल इफ में जाएगा। एलिफ में, एलिफ मीन्स एल्स इफ, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये मैसेज प्रिंट करेगा ऑर्डिनरी फाइल और एफ आई करके क्लोज कर देगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट में सपोज आपने यहाँ पर कोई भी एबीसी नाम दे दिया, एबीसी नाम की ना फाइल है ना डायरेक्टरी है, तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी, तो एल्स इफ में आएगा। यहाँ पर ये चेक करेगा क्या ये ऑर्डिनरी फाइल है, नहीं है, क्योंकि ये फाइल नाम की और डायरेक्टरी नाम की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये प्रिंट करेगा नीदर डायरेक्टरी नॉर ऑर्डिनरी फाइल। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। SHCHKFILE, क्लियर स्क्रीन, एंटर द नेम। सपोज मनियार हमने एंटर किया, बिकॉज मनियार नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इट्स एन ऑर्डिनरी फाइल। ओके, नाउ लेट्स एंटर सेकेंड नेम CHKFILE, ये तो फाइल का नाम है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी फाइल होगी। ओके, दिस इज द प्रोग्राम। Now let's enter any name. Okay, this is neither directory nor ordinary file, right? Now this, we close the session.